ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్ మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు కొనబడను. Our Itihasa's connection to it. Whenever there is a chance, yeah, I try to. We are very excited and happy, and we take pride in it to bring out that element in our films. Yeah. Hello, hi, Mr. Director. I mean Karthik. I'm very curious about this. कि मिराई का मतलब क्या है? Mirai actually means future, but we gave it a very fictional sound to it. It has a different meaning in the film, so you'll see the context of it. So, I'm just see not the film. mistaken. I think this is your third film, right? Yes. And फिर आप future कहाँ देखते हो अपना? हिंदी film industry में या Tollywood में ही रहना पसंद Oh, करेंगे? I have no idea. I would just want to make films, so wherever it is. Thank you. हाय मैं दीपेश पांडे दैनिक जागरण से। मेरा क्वेश्चन तेजा आपसे रहेगा। Sir, बताइए. बीइंग एक्टर जब आप किसी फिल्म के लिए किसी फिल्म को करते हैं तो उसकी आपकी पर्सनल प्रिपरेशन भी होती है। लाइक इससे पहले जब आपने हनुमान किया तो उसमें भी हनुमान जी के बारे में या उनकी शक्तियों के बारे में काफ़ी प्रिपरेशन रही होगी, और यहाँ कहानी भगवान राम से जुड़ती है, उनके और कुछ 9 शास्त्रों से, जो 9 शास्त्र लिखे गए थे उनसे जुड़ती है। तो उन चीज़ों के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आपकी अपनी पर्सनल रिसर्च क्या रही, किन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा, देखा और जाना। So this film is predominantly an action adventure. It has a lot of fantasy, emotion, and it's about a boy's journey who starts off from nowhere and realizes his dharma and how he stops a catastrophe from happening. That is the film about. So there was not much need about research, and I don't need to do any research about. If you're referring to our dharmas, I don't need to do any research about it. We grew up on it, and we all know about it. सेकेंड सवाल करण सर मेरा आपसे रहेगा। अभी आपने कहा कि आपने ट्रेलर देखने के बाद आपने कहा कि ना जाने ऐसी फिल्में हम कब बनाएंगे, एंड आप तो उस पोजीशन में हैं, और मेरा अब वही सवाल आपसे है कि ना जाने ऐसी फिल्में हम कब बनाएंगे, वो आपका जवाब इस पर क्या रहेगा? हाँ, ये film as much as it's ours, now it is Karan sir's also. So this is you all own this film. You have welcomed me for Hanuman with your open arms. So this is for all the Hindi audience out there. We take Hindi language release very seriously. It not only about the dubbing, we also make sure that it feels like an authentic Hindi film, and so we are promoting here, and Karan sir is here because of our sincerity towards Hindi language. So it is your film also. It's not a film just coming from South. करण सर आपको जोड़ना चाहेंगे इस पे? बोल दिया, कह दिया ना, बस कह दिया। Sir, why are people trying to put you in spots, sir? No, they always. That's what you said at the beginning. You're scared. You're always worried about the media, and now you know why we have to worry. No, but they're always very kind. They're always very kind, and I feel like जैसे आपने कहा कि of course it's our ambition to make feature films like this and what we call like quintessential tentpole films that have something interesting and exciting, that dabble into the world of our civilization, our deep-rooted culture. Our endeavor with Brahmastra was that, and we hope to make several films in that zone, and we are producing several films, and we hopefully will have multitude of filmmakers like Karthik in Hindi cinema as well, who will put their hearts and heads online just to tell a story. Hello, this is Rijita from Filmfare. Here. Hi. My question is for the director and the producer. First of all, congratulations, the trailer looks amazing. So what was the most challenging part for you, the storytelling part of it or the technical aspect of it? Because mounting something like this is not easy. So for us, it was never an exhausting thing, because we always felt we were driven towards it from the beginning. So we never felt that exhaustion. Just these last 10 days is where we are feeling that exhaustion, just maybe because of the anxiety of how it will reach. That's all. Yeah. So typically, you can say challenge is an opportunity. So we, like I said, we want to make a pan-global franchise with Mirai. Again, we are ambitious and constrained with the resources.
So to make a, like the pan-global, you call the movies in the scale of Avatar, which are done in billions of dollars. So yeah, definitely we cannot have the resources like that. So then comes like, how do you work on it? So then comes the teamwork and the director's vision, significant commitment from various actors, several technicians, different phases of the project. Yeah, we ran through the COVID period too. So, and then how do we present film to the audience? So we feel we did quite well, and we hope everyone will receive it well, and we can see the success. Thank you. Hello, sir. This side. हेलो सर दिस साइड करण। मेरा नाम शाहिद है फ्रॉम सिट सिनेमा। सबसे पहले ट्रेलर लुक्स गुड अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सर ट्रेलर विजुअली वाइज। इससे पहले तेजा साजा सर ने फिल्म की थी हनुमान, आई थिंक 2024 12 जनवरी को रिलीज़ हुई थी वो। मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो गेटी गैलेक्सी में देखा था और काफ़ी अच्छा, मतलब कम बजट में एक अच्छा सिनेमा था। तो वैसा ही ये होगा या फिर उससे कुछ अलग हटके इसके अंदर आपने ट्राई किया है? जी। पैशन वही है सर। ओके। हार्ड वर्क वही है, एफर्ट वही है। वैसे ही हमारे लिमिटेशंस से बाहर आके हमें बहुत बड़ा करने के लिए कोशिश किया, बहुत बड़ा दिखने के लिए आप सबको कोशिश किया। We have put in a lot of effort. I don't want to compare any film with another film. But all I can say is Mira is going to be an experience for you all. As you said, please go to theatre again in Galaxy on September 12th. वो Jan 12th था, ये September 12th है। इस बार भी आप जाओ, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन इस बार आपका घर का पूरा फैमिली को लेके जाओ सर। We've made a very clean film. आप पूरा फैमिली को, आपका बच्चे लोगों को, पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन करण सर से एंड डायरेक्टर सर से भी है। जिस तरह से करण सर ने बाहुबली को प्रेजेंट किया था यहाँ पे, लक्ष्य सर को किल में प्रेजेंट किया, न्यू कमर्स को ज़्यादा चांस देने के लिए जाने जाते हैं करण सर। तो अभी हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सर ऐसा क्या हो गया, लाइक बॉलीवुड इंडस्ट्री में, कि बड़े बड़े बजट्स की फिल्म बन रही है बट बॉक्स ऑफिस पे रिसेंट टाइम पर सबने देखा है कि कलेक्शन कैसा निकल कर आ रहा है। तो क्या लगता है ऐसी फिल्में जो कम बजट में प्रेजेंट हो रही है और लोगों को अट्रैक्ट कर रही है थिएटर की तरफ? हमने रिसेंट टाइम पर बहुत सारी फिल्में देखी, सैयारा देखी, उसके बाद जो महाअवतार नरसिम्हा आई, अब ये भी कहीं ना कहीं विजुअली वाइज अच्छी दिख रही है। तो क्या लगता है प्रोडक्शन वैल्यू ज़्यादा हो रहा है या फिर एक्टर्स की फीस ज़्यादा हो रही है, जहाँ पर बजट बढ़ रहा है बट फिल्में नहीं चल पा रही? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। हर फिल्म की अपनी नसीब होती है, हर फिल्म की अपनी कहानी होती है। ऐसा बहुत बार ये भी हुआ है कि बहुत बड़े स्टार्स हैं और बहुत बड़े एक्टर्स हैं और वो फिल्म बहुत चली भी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ऐसा सारे एक्टर्स अब समझने लगे हैं कि दे हैव टू कंट्रीब्यूट टू द फिल्म्स विजन, और वो अपना डील सेपरेटली कर रहे हैं। एवरीबडी इज बिकम अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर टाइम्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक बॉक्स में नहीं डाल सकते कि अच्छा आपने यंग एक्टर्स को लिया और आपका विजन बड़ा है तो वो फिल्म चलेगी। ऐसे बहुत बार हुआ है कि वो फिल्म भी नहीं चली है, और ऐसा बहुत बार हुआ कि आपने सुपरस्टार्स को लिया है, विजन बड़ा है, वो फिल्म बहुत चली है। तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते। हर दौर होता है, हर फिल्म होती है, हर एक्सपीरियंस अलग होता है। हमने कितने सारी ऐसी फिल्में देखी हैं साल में जो वाकई हमारी नैरेटिव को चेंज करती रहती है। अभी बहुत सारी फिल्में न्यू कमर्स के साथ आएंगी जो म्यूजिकल्स होंगी। ऐसा नहीं है कि वो सब फिल्में सैयारा बन जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत सारे एनिमेशन फिल्म आएंगी। ऐसा ये भी नहीं है कि वो सारा नरसिम्हा महाअवतार रिजल्ट होगी। ऐसा कुछ रूल नहीं होता। बॉक्स ऑफिस has no rules. You have to create stories, tell different stories, and then the film becomes like Teja said, ये फिल्म आपकी है। आप तय करेंगे कि ये पिक्चर को आपको बिजनेस देनी है, प्यार देना है, बहुत सारी इज्जत देनी है। ये बाकी सारा audiences, as they say, consumer is king, for us audience is God. They will decide. He said it, ladies and gentlemen. We'll take 2 more questions, okay? So Hello, जी। Vishwa sir, again Dipesh this side.
क्वेश्चन आपसे रहेगा क्योंकि नॉर्मली जब हम माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल फिल्में बनाने जाते हैं तो एक दिमाग में ख्याल आता है कि इसमें बहुत ज़्यादा बजट, बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। बट जब आप इस फिल्म के बारे में सोच रहे थे तो सबसे पहले ख्याल क्या है, और बजट और पैसे को लेकर क्या कुछ आपने सोचा कि किस स्तर तक जाना है, किस लेवल तक जाना है? जी। So, like I said in the beginning, I worked with Karthik from 2017. So, this film we started much before Hanuman was started. So, when he got this story and the span, we know it's a very big task. And with the depth of knowledge Karthik has on how to bring the best experience on the screen. And we worked with Teja when he came back from his, what do you call, like, he's worked as a kid, and then when he came as a young adult or a hero, we worked with him in Oh Baby in our banner. So we were very confident that we can do wonders. And so we didn't put any specific limits. So we spent as it's required for the movie to deliver. We worked for over 2 years, and we got the best. Thank you so much, sir. We're taking one last question, please, ladies and gentlemen. जी आप पूछिए सर, आप पूछ लीजिए. Don't worry, sir ने बोला है, let's wait, we'll take questions, don't worry. The benchmark for this film is Bahubali. How much pressure you had before producing it, and how much pressure you gave them? Yes. Ma'am, you can never compare one film to the other. Every film has its own journey. And I think everyone on this illustrious platform will tell you that Rajamouli sir for us is he's like literally the benchmark of great cinema of India. We are all humble students wanting to learn from the master. He's a master. You cannot ever dare to compare to Rajamouli sir's vision. I wouldn't, and I'm sure everyone who has tremendous respect for him in their hearts will say the same thing. Here I want to say, it is a totally different experience that you're going to have when you watch Mirai. It's very, very different from anything you have seen. The narrative, the combination of deep-rooted civilization itihas blended with modern-day storytelling and the exceptional emotion that flows within it. It's a totally different experience, and I wouldn't compare this to anything you've ever seen anywhere. तेजा last question मेरा आपसे है. तेजा here. भावना शर्मा नव भारत. हाँ बोलिए. हाँ, ये कोइंसिडेंस है कि आपका हनुमान में भी ये कैरेक्टर है कि आप बहुत एक कॉमन मैन है और उसके बाद आप सुपर हीरो बन जाते हैं, आपको अपनी शक्तियों के बारे में नहीं पता. इस फिल्म में भी थोड़ा सा जो हमने देखा वो, और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था हनुमान को, और आई थिंक इसको भी पसंद करेंगे. मैं बोल रही हूँ कि ये कोइंसिडेंस है, पर क्या आपको ये नहीं लगता है कि जिस तरह से जो स्पाइडरमैन है हमारे, जिनको लोग इतना पसंद करते हैं इसलिए क्योंकि वो खुद अपनी शक्तियों को नहीं जानता था, वो फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके इस कैरेक्टर के लिए? It's like you're the chosen one for this, of course. पहले हनुमान में हमने आपको देखा, फिर यहाँ पर देखा. So, are you the chosen one is what she's trying to? Ma'am, I strongly believe that there is a higher power that is guiding me. Otherwise, these kind of stories wouldn't come to me. And from where I have started, I come from no background. Even in Telugu, I come from no background. From where I have started, I was going from office to office for my break or for an opportunity. And in the same banner, after growing up, I've been a child actor, but after growing up, in the same banner, in Vishwasa's banner, I have done a character in their film. From there, I became a lead actor, and now sitting here today, along with Karan sir, addressing national media, it is not a small thing for me, ma'am. There is definitely universe helping me. Bhagwan ka krupa mujh par hai. I believe it, ma'am. Hi Teja, I'm supporting this question also. I'm supporting these questions.
I seen that you are very religious person. Always you do religious in your films and all. Sorry, ma'am? You are very religious person. Each and every films in between religious and all. Are you a religious person in life? No. Religious. Religion in every film you're saying. Okay. Yes. Ma'am, I don't understand this question. Nobody asks anybody who does the same love story again and again and again. Why are you asking when we are trying to show our dharma? We have to be proud of it. This is our land. Sure, we are proud. This is our, no, ma'am. Ma'am, what I would like to say is, these are our morals, and moreover, it's a, whatever you have seen the trailer, it's a 3-minute 10 seconds trailer. उसमें 10 सेकंड का हमारा भगवान श्री राम का दर्शन है. उसके लिए आप पूछ रहे हैं रिलीजियन वगैरह. ये फिल्म में फैंटेसी है, एक्शन है, एडवेंचर है, एंड हनुमान भी, उसमें भी वो एक सुपर हीरो कहानी है, उसमें एक सिस्टर है, उसका एक अलग इमोशन है. लेकिन जो भी हम वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट a small moral or a connection with itihasas in a very cool way. You have to be happy that for the younger generation we are trying to tell our history in a very cool way, ma'am. I hope I think he said it all, ladies and gentlemen. We'll just wrap this up. Bully. Did you take any kind of liberty, sir? Because you are the DOP and the director of this film. Was it like easy for you? Because, you know, it took both 2 years of my time liberty. Definitely easy. I don't have to tell it to another person, so it's easier only for me. So I don't think. One-man army doing Sir, everything. they call it cinematic liberty for a reason. Sir, we have taken liberties in films that don't have VFX and AI also. We have taken many liberties in our life. And right now we are taking the liberty of saying goodbye to all of you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much, very Karan sir. That's Hello. all we have for you, ladies and gentlemen. I know. This conversation just can go on Just and a on. second, I would like to add one small thing. Special thanks to Apurva sir, thanks to Bhumika ji, thanks to the whole Dharma team who have been supporting us in bringing this film to national audience. I will never forget what you're doing for us, sir. Karan sir, thanks a lot, sir. Thank you. Sir. Thank you to all the media who have